हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं लाइव पर। और दिस इज प्रोफेसर राजीव धर। आई एम एसोसिएटेड विद IIT Roorkee एज अ फैकल्टी इन द एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और आज फिर मैं आपके साथ एक विशेष मुद्दे पर, एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करूंगा, जिसे कहते हैं, द टॉपिक इज रेफर टू एज पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो ये होगा हमारा आज का चर्चा का विषय, डिस्कशन का टॉपिक। ठीक है। सो इन द 2-3 minutes we will start the topic. I will just wait for more and more friends to join this session. Okay, so today's topic is, points that need to be considered while going for a job interview. This this topic is very crucial from the sense that, from the perspective that, many students are there. There are many people who do not understand the criticality, the importance. Those who are freshers, those are working with, or those are just pass out from the institutions, or are beginners. So they need to keep certain things in mind while going for a job interview. Now, so the first point that I would like to emphasize is arriving late for the organization, to the organization, while going for a interview. One needs to take into consideration, one needs to understand that, you know coming late for the interview or the process is very objectionable thing. It has a very bad impression on the researcher, on the interviewers, or on, if you talk about the various different people. They feel, or they take it in a very negative way when someone comes late for any interview, no matter what the cause or the importance is. So accordingly, what I would suggest is, never be late while you are going for an interview. The second point that I would like to emphasize, I would like to speak or talk about is speaking negatively about your previous organization. Okay. So when a person goes for a job, you know, so when you are going for a job or a, just one second.
So when you are working in an organization and you go for an interview uh, for a better job opportunity, or for career growth, or you are not happy with the organization and you are going for a job, you are planning to do a job shift. So I would always advise you that no matter what your experiences have been in the previous organization, or let's say in the current organization, you know, don't talk negative about that organization. That is really very, very dangerous. And it gives the impression that to the interviewer that when you are speaking negative about the current organization, tomorrow when you will join the present organization, or let's say the interviewer's organization, or who have called you for the interview, that organization, then there also you will, there is a high probability that if there is something that you did not like, then you may end up criticizing that organization also. So people, interviewers specifically, they don't like that, and they take it, most of the time they take it very negatively. Hence, in the process of trying to express your concerns towards your present organization, you should avoid criticizing or speaking negatively, because for the interviewer, or let's say interviewing organization, you are new, right? People don't know you. So to a newcomer, if you start expressing your grievances, that highlights about or speaks about the disloyalty that you have, or type of behavior that you are saying. Okay. So that is the reason why I would suggest that you never speak negatively about your current organization. Okay. Third important thing, and these are not the points that I'm speaking to you are not in sequence. So you can make it in sequence. So these are the third important point which you need to work on, which you need to focus on. You should be prepared with some of the common questions that are generally asked in most of the interviews. For example, tell me something about yourself, what type of job you are looking for, what type of career goals you have, what is your vision and mission for your regarding your career, what are your 5-year plans, what are your long-term plans, career growth, and so on. Basic questions relating to your technical areas, in whichever area you belong to. These are very common questions which almost every interviewer asks. So you should be mentally prepared that these things will definitely come, whichever area you belong to. These are very okay. So this means that you need to be prepared. You need to work on these questions, and this not only will help you in preparing yourself for the organization, but it also will help you in understanding that, giving the idea that the examiner, the evaluator, or the presenter, they are all, they are willing to understand you. They are willing, they will get a greater idea that how serious this candidate is. So that's why I say that you need to be prepared with the common or the basic questions. It's very essential from your perspective. And that is why it also highlights how good you are in, how serious you are while going for the interview. Okay. Now we talk about the third important aspect, that is, while giving the interview, you ramble off, or go off the topic out of passion, out of emotions, or anything else. You out of the track. That is extremely dangerous, if you ask me, because you have to stick to what is being asked to you. Most of the time, people starts, in the process of expressing themselves, or in the process of talking, displaying that they know more than whatever is asked. What happens is that they start speaking too much, and that at times can become really very dangerous. The interviewers may take it very negatively. Hence, it's very important that you stick to the point.
Whatever you give answers to whatever is being asked to you. Unnecessarily, I do not think it's very important to keep on exaggerating or speaking, giving more than necessary answers that has been asked. जैसे कि अगर एक नंबर का सवाल पूछा जाए तो एक नंबर के लेवल का ही आंसर दीजिए. Don't give a 10 marks answer if the question is not of 10 marks, or irrelevant answer, or answer which you may think it is correct, but actually the interviewer has not asked those things. That only highlights whether your understandability about the topic, the question that is good or bad. So unnecessarily giving more than necessary expressions or more than necessary, what do you say, explanations to display your knowledge is at times maybe counterproductive. So that's why I would suggest that you should avoid such type of things. Another important aspect, what we talk about, what we say is when interrupting in between. Whenever someone asks, so I do not think, for example, I have a different perception, or I do not think so. This type of things should be avoided. Interrupting in between when the interviewer asks something, कुछ भी पूछता है तो you're not supposed to interfere. You have to listen patiently, and then accordingly you have to give answer. Failing to listen to the question properly, carefully, and in a very serious note is taken as disrespectful, and it is also considered as unprofessional. So that is the reason why you need to be very, very careful while not only speaking, but at the time is when during listening, what the person is saying, the interviewer or the panel is saying. Okay. Yeah. Another important aspect is about the dressing. Many times I have seen and I have also found that specifically the younger generations, the present Generation Z, they take their dressing sense very lightly. So for going for a job interview, when you are going, so job interview is a professional thing, and you have to dress professionally. That is male, then formal dressing is very much required. No need to go on casual dress or casual shoes, be it shirt, be it pant, blazer, whatever, tie and all those things. Wherever, whatever is required, casualness in dressing sense should be strictly avoided. That only highlights if your attire is not suitable to the venue, or let's say to the purpose. That only highlights how casual you are in your approach, and how casual you are, or you are not aligned with the company's culture or company's professionalism. The impression may go very, very wrong in that case. So, sometimes I've seen people wearing jeans and going for an interview, or, nowadays the new culture has come up, wearing torn jeans, or, flowery kind of shirts. These things should be avoided for both male and female. What should be the dress is not important. What not should be the dress, that has to be primarily focused. Whatever comes under a professional or a formal dress, only those things should be, the attire should be like that. By saying that, I do not necessarily or compulsorily mean that you have to compulsorily wear a blazer, but it's always good. But having said that, the dressing sense has to be formal. Okay. Now coming to the next point is, before going for the interview, you have to understand what is the company all about. What are the products of the company? What are the services provided by the company? What type of company it is? A little bit of research work is very important from your point, while going for the job interview. This only gives the impression to the interviewers that you are a serious candidate and you are very, very sincere person also. ठीक है? तो
information about the company relating to its, all whatever I've said here, whether it talks about the products or services or the type of organization, its historical background, how it was, the company was formed, so a little bit about the culture of the organization, so on and so forth. All these information is available in the company's website. Okay, so those things, if you go through while surfing the net or through any other document studying, so that is always appreciated by the organization. For example, company's mission, values, products, services, whether it's digital products also, what is its industry position, what it is planning for, vision, mission, all those things. So before going for the interview. Apart from that, if the company is having some products or services or doing some activity in your area of specialization, knowing more about those things is considered to be excellent. So by doing little bit of ground homework, you actually increase your possibility of getting selected to the company. Okay, or choosing the. Now, here some people may say that, sir, I am going for the interview just for an experience sake. I'm not actually interested in joining the organization, but just for in experiencing, or how to face an interview and so on and so forth. I'm going for the interview. So why I need to be doing so much research, or I need to be formals, and I can go like this only. Yes, that is fine. That you ultimately you may be just going to attend the interview for the sake of practice only. But why not then doing a perfect practice? जब practice ही करना है, तो perfect practice करो, right? Why a casual practice? Because casual practice में practice will not be good. It will be bad practice. And bad practice, it's better to do no practice than doing a bad practice, because that will only damage you, right? And who knows? Because you have to also understand, my younger friends, that this world is round. Maybe tomorrow or day after tomorrow, you may have to get back to the same company for some reason or the other. Interviewers will remember you. There is a high chance of that. So why to create a rift in the beginning only, right? Then comes to our next point. The next point is failing to ask one or two questions while attending the interview. It's a very common thing that interviewers give you the opportunity to ask questions at the end. Most of the time, you see that at the end, when the interview is about to get over, the interviewers may say that if you have any questions, please ask. So actually, they are not asking. This is an opportunity for you. According to me, if you ask me, I would suggest that this is an opportunity. And here you have to display certain behavior which may create a very positive impact about your candidature or your profile. What is that? That is, you may ask certain things which the company will be very happy to share or inform you about. For example, you ask such question that shows that you are curious about the company's upcoming new products, new services, new changes that the organization is planning to come up with. What is the way the organization is planning to think and go ahead in the next couple of years? How are they planning to, if you have observed something, then asking about why is it so, or how is it so? These type of things you can ask. So you may not be seriously interested in knowing the answer, but at least you can ask these questions. And when you ask such questions, it creates a kind of a good feeling amongst the interviewers. And they get the feeling that, this is a guy who has come, or this is a young lady who has come and who has gone through our company and is curious, shows the level of curiosity. So those things, when asked, and they can be not very complicated, but very simple thing. For example, what would be my role? How will I be able to contribute to the organization?
can you explain about the culture of the organization? What type of team members? What are the future projects? That is, if let's say it's a project kind of thing or something like that. What kind of projects are there in the organization? What are the future as type of projects that the company is planning to receive? ये सब चीजें, these questions, you know, let's say if you are from what are the new type of technologies? Let's say if you are a finance guy, you can ask what type of new type of financial technologies company is planning to take up, planning futuristic. तो वहां पर वो that they will try to give, that will give the feeling to the interviewers that, oh, this guy is really very very serious and he's proactive and he's very positive. That is what is required. Okay, so that is a very important aspect, and you should always think about focusing on these aspects. Now comes a very important aspect, that is asking questions relating to the salary. That's a very dangerous thing. What I would advise you, you never ask about the salary from your side. If they themselves tells, then it is fine. You never take the initiative to ask how much is the salary, what is this, how much will I get, what is that break even and all those things. कट के हाथ में कितना आएगा, allowances कितना मिलेगा, and all those long list of questions. This is a point which should be always avoided. Why I say that you need to be avoid all these things? Because these are dangerous things. It may make the person feel offended. Okay. Now, some more points are there which I am going to discuss with you. I'm going to share with you, which though you may be aware of, but many times we tend to underestimate or we tend to ignore. पहला उसमें जैसे मैंने बताया, एक कंपनी के बारे में जरूर रिसर्च करो, डू स्टडी द व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इट, बट even further more important aspect is understand the role for which you have applied. You have to be clear what is the profile in which you are going to apply for. That is the job description, right? And job specification. Specifically description means karna kya, what is to be done. It's important. It's important, and it's your right to know that what is the role that you are going to play, what is going to be your contribution to the organization. Responsibilities, duties, profile. So you need to understand that well in advance before going for the interview. And during the interview, you can always get clarity about that profile or that position. जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि भाई they give an opportunity to you to ask questions, right? So if you think that there is something missing or something confusion or some aspect is there, whether it will be work from home or from field from place, or it's a hybrid mode, कैसे होगा क्या होगा, these things you have to know in advance. And if there is some gap, you can ask when they ask you to ask any question. Okay, next aspect is use when they ask you to explain about yourself or to narrate about you, some way you try to highlight your accomplishments. It's very important. Many times what happens is the interviewers are always in a hurry to go through your profile. They may miss. That's a natural thing. So when you highlight your accomplishments, that for example, I completed this much target in this much amount of time and saved this much for my company, A, B, C, 2, 3 major accomplishments. If you are a fresher, you may not have accomplishments, but you may have worked some projects or some training programs you might have gone through. So those are your accomplishments, or you might have done some projects in the school level or college level. Then that are your achievements. You can highlight them, because it's not about what you have done. It's about the passion with which you are narrating whatever you have done. That's number one. Number two, how much curious or interested you are in while talking in whatever you are saying. They try to judge that also. So by identifying 2, 3 key achievements, if you try to narrate them with great passion, with great expression in the face, that also highlights your level of energy. So internships, so projects, so data related ho,
matrices related ho, anything like that. You can always highlight those, and always remember, please be prepared with some examples, because companies will not only listen, they will say, can you narrate an example where you did, for example, you displayed team building behavior as an effective team member, or where you led a team. The situation was critical and you found out a way to handle the situation, and you brought the team out of a critical situation because of your leadership capability, because of your team membership capability. See, leadership or teamship or conflict wala situation, or these are all common things, and they keep on coming, and you have to mentally prepare. And if you have not experienced, I would say, so at times cook some things like that and go and discuss this. Okay, so that is about the key things that you need to understand, need to know. Now, another important aspect is your body language and eye contact. Your body language is something that speaks volumes about yourself. It also talks about your confidence level, your interest level, your proficiency, and your positive attitude level. Further, in body language, your eyes plays a very significant role. Always try to make direct contact and a very humble and a very polite contact with the interviewer. Whoever you are responding to, contact should be with that, with a gaze to the other members, with a very, very soft gaze to the other members, right? So that talks about that you are in the room. It only highlights that. One mistake that many times people do is, at that time, you should switch off your mobile. Don't, some people have the habit of touching the mobile every few seconds or a minute. They can't stay without, as if some great person is going to call them any point of time. No, please keep your mobile switch off mode when they go, until unless it is required. Okay. So you make a firm handshake when you are asked to do so. You make appropriate eye contact. Again, eye contact, direct eye contact does not mean you start, gazing at the person and the person starts feeling this person is, threatening me or that. And avoid fidgeting. Okay. You give a polite or a humble or a light smile, and lean slightly forward to show that you are engaged, you are positively involved in the discussion. So these are some of the key aspects that you need to take into consideration while you go for an interview. Also, nowadays, another important aspect is that you have to have 2, 3 hard copies of your resume. 2 to 3 copies you always keep, even though it's a digital era. I understand that you might have already shared your resume to the company, whatever the case be, but still, present situation is that it is always comfortable to keep 2, 3 copies of your hard copies of your resume. You may not require to give it to them, to the interviewer. They may already have it. But in case they do not have, then it will prove to be helpful. So you can immediately take it out of your bag, and you can hand it over to the concerned person. Another last point that I would suggest is that, relating to during the interview aspect, is that please, for God's sake, carry your own pen. Many times people forget this, and this is a dangerous situation. It is a very bad behavior, according to me. If you ask the pen from the interviewer for writing something or explaining something or signing any document, you should have a pen with you which is in a working condition. Okay, so that is another important. And lastly, but not the least, follow up once the interview is over through appropriate channel, whatever channel has been asked on, after maybe 3, 4 days or whatever time, minimum time that has been allotted to you or shared with you, that after 3 days, 4 days, 1 week, 10 days, whatever is that, it is always good to do a follow up. And finally, when you are leaving for the interview is over and you are going back, done, do not forget to give a pleasant smile and
thank the interviewer for the time and opportunity that they have given you for conducting the interview. So these are some of the important aspects that you need to take into consideration while going for a job interview. Well, there could be some other ways also. The list is long, but these are some of the key things that I believe you should take care of. So now, with this small, discussion, I keep the floor open. If any one of you have any queries or questions to ask, you are most welcome to pose your question. So the floor is now open for you. You can ask in English, Hindi, whichever language you are comfortable. Uzzal Saha, good afternoon. Should we wait for Dr. Divyajot Pulvaskar has asked, should we wait for the interviewer to offer us a seat? Yes, I mentioned that. Yes, you should always, you should never go and directly and pull the chair and sit down. That's a very bad behavior. You should ask. It's a common gesture. It's a good behavior that you wait until the interviewer, tells you to sit down. And that's a good gesture from the interviewer's perspective also, that they should, once the candidate has greeted the interviewer, to tell the candidate to sit down. So it's a great gesture. If you have to have a little bit of patience. No, it's never happens that they don't tell you to sit. So they will have patience. Let them offer you the seat, and when you accept their offer and sit down, that only highlights a good cultural background with the candidate. So yes, you should wait until the interviewer tells you to sit down or the panel tells you to sit down. जाके तुरंत कुर्सी पर बैठ जाना चूंकि रखा हुआ है, ये हाईलाइट करता है कि आप में थोड़ी सी जो है कल्चरल अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं कुछ इशू है. तो ये हमेशा ही अच्छा होता है अगर आप थोड़ा सा रुक जाएं और उनके बैठने के बोलने का इंतजार करें. Which some questions, some points are such that you cannot have a direct answer. For example, if the interviewer, if they offer you for, or tea, coffee, something like that, should you accept it or not? Well, that depends upon the situation and the time. What is the situation? What is the time? Accordingly, if the things are going pretty well, you can accept it. There is no harm. But lunch can be taken after the interview is over, and you can accept the tea, but again you check it out, what is the situation. If the situation you feel that it is going in your favor and positively, and they are trying to build up an informal, what do you say, environment, you can accept the tea. But if you think that the environment is going against, so you can very politely refuse
saying that you have already had it or something, some reason, and you can decline it so that the track does not get changed. Again, I will suggest, try to give that much answer only जितना पूछा गया हो. अननेसेसरीली डिस्प्ले करना कि मेरा फैमिली में इतने लोग हैं, कोई यहाँ पर ये है, कोई वहां पर वो है, मैंने ये बड़े बड़े काम किए, ऐसा किया वैसा किया, ये नहीं करना है. दैट्स अ ब्लंडर. दैट ओनली यू मे फील दैट कि मैंने नहीं बोला तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा. वेल, उसको जो पता करना होगा वो वही पता करेगा. बाकी चीजें अगर वो नहीं पूछ रहा है तो उसको इंटरेस्ट नहीं है, ये आपको समझना है. ठीक है. द इंटरव्यूअर्स आर एक्सपीरियंस्ड पीपल. उसको जो जानना है वो आपसे पूछ लेंगे. अननेसेसरीली आप चीजों को, या कई बार क्या होता है ना, हमें मेन मुद्दा, मेन टॉपिक का पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम ज्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, हम उनको ऐसी चीजें बताते हैं, सोचते हैं कि उनको उस डायरेक्शन में लेके जाया जाए. वेल, दैट इज अ कैच 22 सिचुएशन, और लेट्स से दैट कैन बी अ डेंजरस सिचुएशन. अगर वो घूम गए तब तो अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आपसे कहीं ज्यादा अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड और बुद्धिमान लोग, वो समझ जाते हैं बहुत बार. तो वहां पर जो है आपके लिए डेंजरस सिचुएशन हो जाता है. ये कभी कभी स्ट्रेटजी काम करता है, लेकिन बहुत बार ये स्ट्रेटजी फेल हो जाता है. सो ये जो है ना, ये आपको देख के समझ के ही ये चीजें करनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा, अगेन आई वुड से, इंटेलिजेंस दिखाना, होशियारी दिखाना, मेनी टाइम्स इट डजंट वर्क. आप इंटरव्यूअर्स को जितना ये बताएंगे कि आप सिंपल हो, सीधे साधे हो और काम करने वाले हो, आपकी सक्सेस रेट उतनी ज्यादा होगी. क्योंकि सामने वालों को कारीगर, काम करने वाला चाहिए. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्रेशर और लेट्स से 2-3 इयर्स एक्सपीरियंस वाले. उन्हें काम करने वाला चाहिए, तो वो नहीं चाहेंगे कि कुछ ओवर स्मार्ट लोग आए. उन्हें कार्यकर्ता चाहिए, फील्ड पर वर्क करने वाला चाहिए, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, आईटी डिपार्टमेंट में, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, किसी भी विभाग में हो. तो दे वांट डूअर्स. तो डूअर्स बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात करने वाले नहीं होते, वो काम पे बात करते हैं. और वो बड़ा आसानी से, जितने सीधे साधे हों इंटरव्यूअर्स के, या जितने सिंपल एंड इजी गोइंग लगे, उतना इंटरव्यूअर्स वैसे लोगों को पसंद करते हैं. कई बार आपकी सिंप्लिसिटी ही आपके लिए सिलेक्शन का कारण बन जाता है, क्योंकि सिंपल लोग को सब पसंद करते हैं. होशियार, अति होशियार को एट टाइम्स लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये आके हमारे लिए मुसीबत बनेगा. तो यही चीजें जो है आपको बड़ा ध्यान रखना है. लेकिन ये खैर एक्सपीरियंस वाले केस में होता है. फ्रेशर का केस में तो आप जितना लर्निंग, ईगर टू लर्न डिस्प्ले करोगे, चाहे जिस चीज में भी हो. और कुछ मैगजीन्स का हो सके तो आप नाम जरूर जान लें, पढ़ लें. फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट. लेट्स से अगर आप एचआर एरिया में हो तो एचआर से रिलेटेड कुछ मैगजीन्स आपको पता होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं उसमें, क्या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. अगर आप जानते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है. एंड सो इज द केस इन मार्केटिंग, इन फाइनेंस, इन टेक्निकल, इन आईटी. बहुत सारे, बहुत टॉप क्लास जर्नल्स, मैगजीन्स हैं आज के डेट में, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है. आप उन्हें रेगुलरली अगर 3-4 इश्यूज भी पढ़ के और फिर इंटरव्यू देने जाएंगे, तो यकीन मानिए आपकी नॉलेज की लेवल बहुत हाई होगी और आपका इंटरव्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा. Now your question is, why do they ask about hobbies? हाँ. And what do they get to know by asking this question? Yes, very important. Okay, good. Thank you for asking this question. हॉबीज, आप क्या खेलते हो, क्या करते हो, उसमें उनकी कोई खास बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है. वो चीजों को हल्का करने की कोशिश करते हैं बाय आस्किंग योर हॉबीज. वो माहौल को ना थोड़ा सा इनफॉर्मल करने की कोशिश मेनी टाइम्स. ठीक है. अनटिल अनलेस, देखिए उसमें क्या होता है, जब भी आप वो हॉबीज भी पूछते हैं तो उनका कैंडिडेट क्या होता है, कैंडिडेट थोड़ा सा लाइट हो जाता है, थोड़ा सा सीरियसनेस से कम हो जाता है. जब बहुत ज्यादा मामला सीरियस उनको लग रहा होता है तब जनरली ऐसे सवाल पूछ देते हैं. उससे क्या होता है, कैंडिडेट थोड़ा लाइट, थोड़ा इजी फील करता है आंसर देने में. ठीक है. अब हॉबीज में भी क्या करते हैं लोग, बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं. अच्छा, हॉबीज में ये भी पता चलता है, देखिए टेक्निकल फ्रेशर के केस में क्या होता है, बहुत बार उनसे आप एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते. और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कितना डेप्थ में पूछा, अभी तो फ्रेशर ही है, अभी तो बिगिनर है, तो क्या पूछे फिर, किस चीज में उसका एक्सपीरियंस है.
हॉबी ही एक ऐसा एरिया रह जाता है जहां पर सवाल पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए हॉबीज आपने बोला, और फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, मान लीजिए पूछा कि व्हाट इज योर हॉबी, तो आप थोड़ा लाइट फील करने लगे, हाँ आपको लगेगा कि हाँ अब आप थोड़ा आपके कंफर्टेबल एरिया में आ रहा, आपने बोल दिया माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स और वॉचिंग न्यूज और प्लेइंग क्रिकेट। तो अब रीडिंग बुक्स जैसे ही आप बोलोगे, अगला सवाल के लिए तैयार रहिए, वो पूछेगा व्हाट इज द लेटेस्ट बुक दैट यू हैव रेड, फिक्शन पढ़ते हो, माइथोलॉजी पढ़ते हो, जासूसी वाला पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अगला वही आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि नहीं, आई 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 प्रेफर रीडिंग लेट्स से डिटेक्टिव नॉवेल्स। तो फिर वो डिटेक्टिव में किसका पढ़ते हो, तो आप बोल दोगे मान लो सिडनी शेल्डन, शेरलॉक होम्स, किसी एक का बोलोगे। कौन सा वाला स्टोरी अच्छा लगा, फिर वो और फिर प्रोबिंग, इसको बोलते हैं प्रोबिंग, फिर और अंदर जाता जाएगा। फिर ऑथर के बारे में पूछ सकता है, ऑथर के दूसरे बुक्स कौन से हैं, उस टाइप के पैरेलल पर। इससे ये पता चलता है कि आप कितने डेप्थ में और सीरियसली अपने हॉबी में भी कितनी सीरियसनेस दिखाते हो। देखिए, जो कैंडिडेट, जो इंसान हॉबी में सीरियस होता है ना, वो उसके पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है, तो ये भी पता था कि वो अपने काम में भी उसी लेवल में सीरियसनेस होगा। राइट। जो मान लीजिए ये कहा कि क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर उससे पूछा सकता है कि भाई पिच की लंबाई कितनी होती है, बॉल का वेट कितना होता है, सिली पॉइंट को सिली क्यों कहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो बंदा सीरियसली क्रिकेट को देखता है, वॉच करता है या खेलता है, उसे ये सब चीजें पता होगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत सीरियस हो, उसके लिए पैशन है। तो जो बंदा, तो कंपनी वाले क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं, एक पैशन वाला। बस कंपनी वाले को क्या करना है, आपका जो क्रिकेट के प्रति पैशन है, या नॉवल के प्रति पैशन है, या डांस के प्रति पैशन है, या कुछ भी चीज का, वही पैशन अब आपका शिफ्ट करके वो काम के प्रति लगाना है, तो उसके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ डाइवर्ट करना है एनर्जी को। इसका मतलब यही निकलता है कि आपके अंदर एनर्जी है, दैट एनर्जी नाउ नीड्स टू बी channelized from, or let's say needs to be diverted from one area to another area। जो बंदा ये बोलता है क्रिकेट खेलते हैं और लेकिन आगे का कुछ मालूम नहीं, या डांस करते हैं या डांस देखते हैं आगे का मालूम नहीं, ये पता चलता है कि ये किसी भी चीज में सीरियस नहीं है, तो काम से रिलेटेड कहां से सीरियस हो जाएगा। जनरल परसेप्शन, ठीक है। हो सकता है काम में बहुत ज्यादा सीरियस हो, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इंटरव्यू तो आप ये भी समझना है, इंटरव्यू इज अ हाफ एन आवर और लेट्स से 45 मिनट्स मैटर, और सारा चीज उसी आधे घंटे में जज करना है। तो इंटरव्यू मे नॉट बी द परफेक्ट वे ऑफ जजिंग, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। बहुत सारी चीजें सवाल पूछ के जाना जा सकता है। तो इसीलिए हॉबीज के बारे में पूछते हैं, और बहुत बार सिचुएशनल पूछ देते हैं, अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट किया, अच्छा आप बोल दोगे कि आर यू अ टीम प्लेयर, बोले हाँ आई एम ए वेरी गुड टीम, तो बताओ क्या काम किया आपने, कब आपने टीम प्ले डिस्प्ले किया। इसीलिए मैंने आपको ये भी बोला ड्यूरिंग द डिस्कशन कि दो चार एग्जाम्पल्स मानसिक रूप से प्रिपेयर रखें, कि वेयर यू हैव डिस्प्लेड दैट यू आर अ टीम प्लेयर, वेयर यू आर, दूसरा एग्जाम्पल दैट यू आर अ टीम लीडर, तीसरा एग्जाम्पल दैट यू हैव हैंडल्ड, आपकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे लेकिन आपने सबको समझा बुझा के झगड़ा खत्म करवाया। और जो प्रैक्टिकल लगे, कई बार आप बोलोगे सर ऐसा कोई अनुभव हुआ ही नहीं, तो बना दो, ठीक है। और ऐसा लगना चाहिए कि वो सही में ऐसा हुआ है, क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ पूछ ही रहा है ना, वो ये थोड़े बोला कि भाई झगड़ा हो रहा है चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ, वो तो नहीं करेगा, वो तो जस्ट पूछ ही रहा है। तो आपको आंसर देना है, तो आपको जो भी आंसर देना है इतनी प्रैक्टिकली, इतनी रियलिस्टिकली देना है कि उसको लगे हाँ ये संभाल सकता है, ये कर सकता है। और खास तौर पे दो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक सबसे ज्यादा प्रेशर के लिए, वो है कि टीम, आप एक टीम में मिलजुल कर काम कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि जो ना टीम लीडर लीडर जो होता है उसके लिए सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि भाई टेक्निकली फिट तो मिल जाता है, लेकिन अपने टीम मेंबर के साथ ही वो लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। या अगर कोई समस्या, हर काम में समस्या कुछ ना कुछ तो आएगी ही कभी ना कभी। क्या आप उन लोगों में से हो जो समस्या का आता है तो आप समाधान की तरफ सोचते हो, ना कि टेंशन ले लेते हो? और एंड डू यू टेक द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हेल्प द बॉस टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है आप कोशिश करते हो कि नहीं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये दो तीन एग्जांपल्स हमेशा अपने पास बनाए रखें। मान लीजिए अगर आप डॉक्टर हैं, तो कब दो तीन जो है सात कलीग्स डॉक्टर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गया और आपने उसमें इन्वॉल्व होकर उसको सोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया,
या अपने साथी मेंबर्स के साथ कुछ इशू हुआ और आपने जो है इनिशिएटिव लेके मामले को नॉर्मलाइज कर दिया, दिस इज व्हाट इज एन एज एन आंसर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नाउ आपका सवाल है, आई हैव बीन टोल्ड इन इंटरव्यूज दैट आई एम स्लाइटली ओवर क्वालिफाइड फॉर अ जॉब और अ पोजिशन, ठीक है। हाउ टू अप्रोच सच अ रिस्पॉन्स? वेल, ये इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आप विचार कीजिए, कौन से जॉब के लिए आप ओवर क्वालिफाइड हो, आंसर उस हिसाब से होगा, ठीक है। ओवर क्वालिफिकेशन अगर उनको लगता है तो आप बताओ कि इनिशियली, अब अगेन दैट्स से कि देयर कैन नॉट बी एक एक मैं ऐसा कोई आंसर दे दूं और उसको सब जगह आप उसको लगा दोगे, ऐसा संभव नहीं है। वो क्या प्रोफाइल दिया गया है और उसके किसके रिस्पॉन्स में आपने लगाया है, जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं। अगर देखिए उनको नहीं लेना होता तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते ही नहीं। बुलाया है इसका मतलब ही साफ है कि इवन दो यू बिलीव और दे बिलीव दैट आप लिटिल बिट ओवर क्वालिफाइड हो, लेकिन वो लेने को तैयार है, बशर्ते आप जस्टिफाई करो कि आपके मन में ऐसा कुछ। ये मत बोलो कि नहीं नहीं आई एम नॉट ओवर क्वालिफाइड, ये गलती नहीं करना है कि आई एम नॉट ओवर क्वालिफाइड। ओवर क्वालिफिकेशन है तो कोई बात नहीं, सर जो प्रोफाइल आपने लिखा है मुझे लगता है मैं उस प्रोफाइल के लिए परफेक्टली फिट कैंडिडेट हूं। ओके, नॉट ओनली अब ओवर क्वालिफाइड उसने बोला फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू यू मे नॉट बी ओवर क्वालिफाइड, राइट। टीम हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू मे नॉट बी ओवर क्वालिफाइड, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, टीम लीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू मे नॉट बी ओवर क्वालिफाइड। तो वो जो है उनके मन में कुछ शंका है और वो चाहते हैं कि आप ऐसा पॉजिटिव या सकारात्मक आंसर दो कि अगर एक ओवर क्वालिफाइड, क्योंकि ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट से प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें ये डर लगा रहता है कि ये बंदा बीच मझधार में कहीं छोड़ के भाग ना जाए, यही उनका टेंशन रहता है क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड है। मान लीजिए एक डॉक्टर है और उसको कंपाउंडर के, लेकिन डॉक्टर की वैकेंसी नहीं है। मैं एक जस्ट एक बड़ा रॉ एग्जांपल दे दे रहा हूं। या एक बंदा है जो आईटी प्रोफेशनल है, उतना क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बंदा लोअर लेवल पे अप्लाई कर दिया, तो वो बुला तो लिया है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बाकी एकदम उनको लगता है कि बेकार है, ये बंदा एकदम सही है, लेकिन उनके मन में ये डर रहता है कि ये ले तो लेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही इसे कुछ बढ़िया मिलेगा ये सबसे पहले छोड़ देगा, क्योंकि इसकी काबिलियत कैपेसिटी हमारी प्रोफाइल से कहीं ज्यादा। यहाँ पर आपको एक भरोसा दिलाना पड़ेगा उसको। अब क्या शब्द बोलेंगे तो आप पर निर्भर है कि नहीं, ये जो काम है ये मेरे प्रोफाइल को परफेक्टली मैच करता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज, KSA, ठीक है, मीट करता है। और अगर आप ये प्रोफाइल मुझे देते हैं तो विथ फुल डेडिकेशन, फुल कमिटमेंट, और अपने साथ वालों को साथ, अगर ओवर क्वालिफाइड मतलब क्या, मैं बाकी लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ये मत बोलो कि बाकी लोगों पर जो है हुक्म चलाऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि उनको गाइड कर सकता हूं, उनको सही दिशा में ले जाकर प्रोजेक्ट को और ज्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूं, ताकि हमारी कंपनी को और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले। और जब भी उस टाइप का कुछ हो तो हमें, अगर कंपनी को लगता है कि मैं वाकई में ना केवल ओवर क्वालिफाइड हूं, ओवर टैलेंटेड भी हूं, तो मुझे बड़ा वाला पोजीशन भी दे सकती है कंपनी। तो इस तरीके से एक नेगेटिव कोनोटेशन लाने वाले शब्द को आप पॉजिटिव माहौल में बदल देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि कोई मान लीजिए आग लग गई तो सब भाग गए तो आप भी भागोगे। तो आपको ऐसे नेगेटिव चीजों को भी, वो ये चाह रहे हैं कि आप कुछ सकारात्मक बोलो ऐसे सिचुएशन। और अगर आप ये कर देते हो तो यू आर इन, यू आर थ्रू द जॉब, ठीक है। या एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम दैट यू हैव स्पेंट विथ मी। रविवार को मैं फिर दोपहर को 1 बजे एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आऊंगा। हमारा ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा,
और यदि आपका कोई एचआर से रिलेटेड या अपने जॉब से या करियर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं इस संडे को रविवार को दोपहर 1 बजे फिर से आऊंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी अभिलाषा के साथ, इसी अ, भगवान को इसी प्रार्थना के साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।